हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स या द रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या ज़रूरत है इनको क्लासिफाई करने की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि कई सालों पहले इंसान का वजूद हुआ। देयर इज ए वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस। ठीक है। Some microscopic bacteria are of a few micrometers in size, and some, like wheel and redwood trees, are about 30 meters and 100 meters in size. तो कह रहा है कुछ जानवर तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि इनको नंगी आंख से हम नहीं देख सकते हैं। That's why they are called microscopic, and some are bigger in size, 100 meters, 30 meters. Whales की मिसाल यहाँ पे दी है। Some pine trees live for thousands of years, while insects like mosquitoes die within a few days. यानी कि एज का यहाँ पे वेरिएशन है, कुछ हजारों साल जीते हैं, कुछ चंद घंटों चंद सेकंडों जीते हैं। Some organisms are colorless and even transparent, and some are brightly colored. Right? कुछ रंग बिरंगे होते हैं, कुछ बेरंग होते हैं, अलग अलग। To understand and study all these organisms is impossible if they are arranged into different groups based on their similarities in characteristics. Then it is as easier to study the different groups as whole. Right? Classification of living organisms में हम देखेंगे the arranging of organisms into different groups on the basis of the similarities in their characteristics is called classification of living organisms. ये definition आपको एग्जाम में आ सकती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और वेदर दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। आगे हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। वेदर द सेल्स occur singly or they are grouped together and live as an individual group, just like I would say unicellular and multicellular. Whether they produce their own food by photosynthesis or get their food from outside. तो यहाँ पे ये देखना है, ये फोटोट्रॉपिक सॉरी ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक है। Of the organisms which produce their own food, जैसे कि plants हैं, what is the level of organization of their body, and what are their special organs. Classification of animals, because plants make their own food and animals get their food from outside. यानी कि classification इनकी different रहेगी as per their food habits, I must say. Organisms have evolved from the earlier simple forms due to the change in their body designs over millions of years ago. हजारों साल तक इनकी बॉडी में जो चेंजेस होते रहे, तो इवोल्यूशन के हिसाब से ये इस स्टेज पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहुंच चुकी है सिंपल से। राइट, द बॉडी डिजाइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स are gradually changing due to changes in environment and the need to adapt themselves to the change in the environment. Some groups of organisms have ancient body designs have not changed much during evolution, यानी कि इब्तिदा के दौरान ये काफ़ी change नहीं हुए हैं, and have simple forms of structures. These organisms are called primitive or lower organisms. Some organisms have acquired their body designs relatively recently and have complex form of structure. These organisms are called advanced or higher organisms. Right? यानी कि हम hierarchy में bottom से top की तरफ move कर रहे हैं। Next is the hierarchy of classification of groups. Living organisms have been broadly classified into 5 main kingdoms. They are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Each kingdom have been further classified into smaller subgroups at various levels as kingdom, phylum, class, order, family, genus,
स्पीशीज। तो इसको आप अपराइट पढ़ेंगे, यानी कि स्पीशीज से शुरू करेंगे तो किंगडम तक पहुंचेंगे। इस तरीके से हम इसको स्टडी करने वाले हैं इस आगे स्लाइड्स में। By arranging organisms on the basis of hierarchy and characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification called species। यानी कि हम इसको वन बाय वन स्टडी जब करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीशीज, तो हम बेस पे पहुंच जाते हैं। तो स्पीशीज हम डिफाइन करते हैं is group of organisms which are similar enough to breed and perpetuate, right? Species की definition है। तो today this is all in this video. Thanks for watching. Thank you.